Hello and welcome to Knowledgist. Starting from today, we are launching finance and banking e-newspaper on daily basis. So stay tuned, stay subscribed, and to download the PDF, join our Telegram channel, that is telegram/knowledgist. If you have not subscribed to our YouTube channel, subscribe now. आज से हम शुरू कर रहे हैं knowledgist.in के तरफ से फिनेंस एंड बैंकिंग के ई न्यूज़पेपर, और हर सुबह ये हमारे टेलीग्राम चैनल में और वेबसाइट में अपलोड हो जाएगा. अगर आपने अब तक हमारे टेलीग्राम चैनल telegram/knowledgist को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी ही ज्वाइन कर लीजिए. यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस, स्टडी मटेरियल हम अपलोड कर रहे हैं. और इसके साथ ही साथ अगर आपने हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए. knowledgist.in finance and banking, date of publication is 7th August 2021, and coming starting from tomorrow you will be getting it every single day morning at 7 o'clock. So let's begin in. This is the e-newspaper. Today we have two, three big articles. Let's see what is important for your exam point of view, what is important for your financial awareness and banking awareness point of view, and it is also going to help you to stay updated in banking and financial sector too. So the first point is PM suggests 4-point strategy to achieve 400 billion exports in FY 2022, राइट. तो प्रधानमंत्री ने एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, एक्सपोर्ट को $400 बिलियन तक पहुंचाने के लिए 4 पॉइंट स्ट्रैटेजी के बारे में बात किया है. क्या है वो स्ट्रैटेजी? इंक्रीजिंग मैन्युफैक्चरिंग मैनीफोल्ड, मैन्युफैक्चरिंग के वेरियस एवेन्यू को खंगाला जाएगा. दे विल क्रिएट मोर एवेन्यूज, मोर सेक्टर्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग टू इंक्रीज द मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट. रिमूविंग लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स, जो लॉजिस्टिक में जो इशूज़ हैं, दैट इज़ द इशूज़ इन ट्रांसपोर्टेशन लाइक शिपमेंट एट्सेट्रा, दैट विल बी एड्रेस्ड. कोऑर्डिनेशन बिटवीन एक्सपोर्टर एंड गवर्नमेंट. आई थिंक you know that government's policies are directly linked to export increase. Okay, so that will be addressed too. And also in finding more global markets for Indian products, because if you don't have a market, then where you will dump your product or where you will sell your product. Like the new markets like Africa, which is the main partner of Chinese products, are to be now addressed. ठीक है. तो जैसे कि चाइनीज़ प्रोडक्ट अफ्रीका में चाइना अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए बहुत सारे स्ट्रैटेजी कर रहा है, नए मार्केट्स देख रहा है. यूरोप से लेके, ऑस्ट्रेलिया से लेके अफ्रीका तक इसके मार्केट्स फैले हुए हैं. उसी तरह इंडिया भी अपने प्रोडक्ट्स के लिए नए मार्केट्स की तलाश करेगा. लॉजिस्टिकल इश्यूज़ को एड्रेस किया जाएगा, गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाया जाएगा और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाएगा. ये 4 स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट ने सजेस्ट किया है और बेसिकली यही स्ट्रैटेजी रहता है एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए. वाई export is important? I think maybe you be knowing that before COVID our imports were high. That was leading to trade deficit, current account deficit, and thus the price of Indian currency is depreciating day by day. And India's economy was also not achieving its desired targets. So that's why export is important. After the ban and the supply chain disruption in global market, India's exports started to rise and imports were curbed. And then our forex reserve has also increased. Our though due to COVID the things are not going well, but still our exports has increased drastically in these days. So it is always important. तो आपको पता है एक्सपोर्ट की ज़रूरत क्यों होता है? एक्सपोर्ट की ज़रूरत इसलिए होता है कि अगर इंपोर्ट ज़्यादा होगा तो ट्रेड डेफिसिट होगा. बाहर के देशों को हम जितना ज़्यादा बेचेंगे माल, हमें उतना ज़्यादा फॉरेक्स रिज़र्व मिलेगा, और जितना हम बाहर के देशों से ज़्यादा खरीदेंगे उतना हमारी जो फॉरेक्स रिज़र्व्स हैं वो ड्रेन होगा और हमारी इकोनॉमी कमज़ोर होता जाएगा. तो इसके वजह से जो गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी रहती है कि कैसे उनको सब्सिडी दिया जाए, एक्सपोर्टर को बढ़ावा और एक्सपोर्टर को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी दिया जाता है, और इकोनॉमी में एक्सपोर्ट इंक्रीज एक सबसे बहुत बड़ा एजेंडा होता है. और फिलहाल गवर्नमेंट की जो एक्सपोर्ट है, हमारे देश की जो एक्सपोर्ट है, वो हमारे जीडीपी के 20% है. तो जिसको बढ़ावा देना और जिसका बढ़ना बहुत ज़रूरी है. करेंटली आवर जीडीपी स्टैंड्स एट समवेयर अराउंड 20% ऑफ आवर जीडीपी. आवर एक्सपोर्ट स्टैंड्स एट 20% ऑफ आवर जीडीपी which needs to increase. Okay, and also to mark the 75th year of our independence, Modi has asked all the mission heads to find out 7 new avenues, 75 new sectors where India could increase or where India could do their export
एक्सपोर्ट्स। ओके, तो 75th ईयर जो एनिवर्सरी है हमारे इंडिपेंडेंस की, हमारी स्वतंत्रता की, उसको मार्क करने के लिए 75 ऐसे न्यू प्रोडक्ट्स या फिर न्यू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को खंगालने के लिए बोला गया है, जो मिशन हेड्स हैं उनको, ताकि इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट बाहर की देशों को कर पाए। तो दिस इज द फर्स्ट न्यूज़ एंड देन विल गो फॉर सम बैंकिंग न्यूज़। हाइलाइट्स ऑफ अगस्त 2021 मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी। लेट्स सी व्हाट इज इट। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, आपको पता है द मेन टारगेट ऑफ एमपीसी इज इन्फ्लेशन टारगेटिंग। मॉनिटरी पॉलिसी में वैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर के ऊपर बदलाव होता है, बट इफ इट इज आस्क्ड इन एग्जाम और इन योर इंटरव्यू व्हाट इज द मेन टारगेट ऑफ एमपीसी, इट इज इन्फ्लेशन टारगेटिंग, टू चेक द इन्फ्लेशन और टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। ठीक है, 2016 से शुरू हुआ है, उर्जित पटेल कमेटी ने रेकमेंड किया था। तो लेट्स सी व्हाट इज देयर इन एमपीसी 2021। RBI monetary policy this time takes a accommodative stand. There is no much change in the monetary policy committee. Repo rate stands as usual at 4%. Reverse repo rate stands at 3.35%. The bank rate and the MSF stands at 4.25%. For more on MPC, we have dedicated MPC session. I have already elaborated MPC in a very clear language, so there is nothing to worry. MPC has voted 5.1. 5 लोग एमपीसी में, 6 लोग होते हैं, आज आई थिंक यू नो 6% इन एमपीसी, एंड आउट ऑफ द 6% 5% हैज़ वोटेड टुवर्ड्स द एकोमोडेटिव स्टैंड, कि जैसा है वैसे रहने देते हैं, टू मेंटेन द स्टेटस को, दैट इज कॉल्ड द एकोमोडेटिव स्टैंड। तो अगर कहीं पे 3:3 होता है तो क्या होता है, एक ज़्यादा वोट देने को मिलता है चेयरपर्सन को, और एमपीसी के चेयरपर्सन होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर। He is called ex officio chairman, or by virtue of being in chair, by virtue of being in Reserve Bank of India governor, he is eligible to become the chairperson of MPC. Getting it? He presides over the meetings of MPC. मतलब एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, मतलब वो जब तक ऑफिस में है तब तक चेयरमैन है। जो एमपीसी के जो हेड हैं, जो चेयरमैन हैं, अगर कौन है चेयरमैन एमपीसी के, आप शक्तिकांत दास के नाम नहीं ले सकते। वाई यू कैनॉट टेक हिज नेम, बिकॉज अगर आज वो रिज़ाइन कर देते हैं वो कल से नहीं रहेंगे, मगर जब तक वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं तब तक उनके पास ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के हेड होने का सारा राइट्स हैं। तो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, राइट। आरबीआई गवर्नर, जो आरबीआई गवर्नर रहेगा वही इसका एक्स चेयरमैन रहेगा। तो सीपीआई, आरबीआई गवर्नर ने क्या कहा कि सीपीआई इन्फ्लेशन में बढ़ा, बट फिर भी स्टेबिलिटी रहा मार्केट में, थोड़ा सा प्राइस राइज को लेके, एंड आरबीआई मेंटेन्स द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी एट 9.5% एंड द सीपीआई इन्फ्लेशन फोरकास्ट फॉर FY 2020 एज 2022 एट 5.75%, ओके, 5.7%. So on tap TLTRO of RBI has been now extended to 3 months, that is up to December 31st, 2021. In last MPC class I have discussed about TLTRO. Please check that video. We have very limited time. And also RBI has raised concerns over the rates in the corporate bonds debentures have decreased in commercial paper, certificate of deposit, treasury bills in United States, and you know that there is a relationship between United States market and India's market. Okay, so Reserve Bank plans 4 BRRR auctions. What is BRRR? Very important for exam point of view. BRRR means variable reverse repo rate auctions. So RBI will now conduct new BRRR auctions. And why BRRR auctions are required? This is to absorb surplus liquidity from the banking system. जो बैंकिंग सिस्टम में ज़्यादा लिक्विडिटी, ज़्यादा पैसा हो गया है, उसको ऑब्जर्व करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो अगस्त 13 से लेकर सितंबर 24 तक BRRR रेटिंग, क्योंकि वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट के ऑक्शंस शुरू कर देगा। जब रेपो रेट बढ़ता है, मतलब रिवर्स रेपो रेट जब बढ़ता है, तो बैंक्स आर इंटरेस्टेड टू कीप देयर मनी इन Reserve Bank of India. So that money from bank will now go to the hands of Reserve Bank of India. The quantum of surplus liquidity now in the banking system stands at 8.5 lakh crore, and the central bank will conduct first fortnight BRRR auction for 2.5 lakh crore, then for 3 lakhs, and then for 3.5 lakhs till September 9, and
4 lakhs in September 24th, 4 lakh crore. The central bank also plans to conduct an auction of rupees 25,000 crore through Government Security Acquisition Program, GSAP 2.0. What is GSAP? That is the Government Securities Acquisition Program. Government securities are allocated to various public, various companies, various banks. But when it is required to absorb the liquidity, what the Reserve Bank of India does, it again acquires the same security that it has sold out earlier to the public. So this is one type of बायबैक. ओके, तो GSAP एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को जानना जरूरी था, तो हमने बता दिया. तो दैट्स ऑल इन दिस एडिशन ऑफ 7th August न्यूज़ आर्टिकल फ्रॉम आवर साइड, फिनेंस एंड बैंकिंग. होपफुली दिस हैज़ of some use for banking enthusiasts, people who are preparing for banking exam. And starting from today, it will be regularly updated in our website, in our Telegram channels. So stay tuned, stay subscribed, join our Telegram channel. And this is Prabhanjan Tripathi signing off from knowledgist.in. Thank you.